Hello, children, welcome back after a long break. I hope all of you are doing well and keeping safe at your home. Children, this is a very difficult time, so don't go go outside the home. Stay inside and be safe. So, again, we are resuming with our studies, and today I am going to take lesson number 3 of English literature. So, let's start our lesson. Date is 24th of May 2021. Day is Monday. Class is second ABCD again. Subject English literature. Topic is lesson number 3, Brave Bubbly. This is the part 1 of the lesson. So today we are going to read the lesson and I will explain the lesson to you. So this is a lesson about a girl, Brave Bubbly. Bubbly was a girl, a very poor girl, but she was very brave and she saved the children, 9 children, from drowning. And she got the President Award for that, for her bravery also. So about Bubbly we will study in this lesson. So let's start. Lesson 3, Brave Bubbly. Bubbly is one of the 9 children of a poor man. She saved 6 children from drowning in the river Ganga. She got the Bapu Gayadhani National Bravery Award on 25th January 2005 from the Prime Minister of India. So Bubbly was one of the 9 children. The very poor man was there, and Bubbly was one of the 9 children. She had 8 other siblings with her, and then she saved 6 children from drowning. उसने 6 बच्चों को डूबने से बचाया था from river in the river Ganga. And for that she got the award बापू गयाधानी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, जो 25 जनवरी को ब्रेव बच्चों को दिया जाता है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, और आपने देखा भी होगा 26 जनवरी को फिर उन लोग को परेड में भी आते हैं, इफ़ यू हैव सीन. सो ये बच्चों को, ब्रेव बच्चों को दिया जाता है एवरी ईयर. सो दिस इज़ हर स्टोरी. व्हाट इज़ हर स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. Babli lives with her family in a small mud house on the banks of Ganga. Babli dreams of going to school, but she cannot because her family has no money for the school fee. However, she has faith in hard work and in God. She is always smiling and helpful. So Bubbly used to live in a small mud house because she was very poor. She didn't have a proper pakka house, but she was living in a very kacha house, mud house with her family. And family was very big, 9 children and mother, father. So there were 11 members in the family and very small house. And they used to live on the banks of the गंगा, यानी कि गंगा के किनारे. जो आपने देखे होंगे, कभी गंगा गए होंगे, संगम गए होंगे, यू मस्ट हैव सीन द स्मॉल हाउसेस. तो उसी टाइप के एक स्मॉल हाउस में शी यूज टू लिव एंड with her parents and brother and sisters. And she wanted to go to school, but her parents were so poor that they cannot afford to give the school fee. So that's why she could not go to the school. उनके पेरेंट्स के पास पैसे ही नहीं थे कि उसको स्कूल फी दे सके, so वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी. But she believed that with hard work and with the blessing of God she can do anything. तो वो अपने हार्ड वर्क में और गॉड के ऊपर बहुत विश्वास करती थी, और इसीलिए वो हमेशा स्माइलिंग और हेल्पफुल रहती थी, सबकी हेल्प करती थी और कभी भी सैड नहीं होती थी. शी वॉज ऑलवेज हैप्पी. सो नेक्स्ट, शी ऑलवेज हेल्प्स हर मदर विद वर्क in the house. In the evening, she goes to watch the sunset over the Ganga. She loves to see the twinkling stars and the changing shape of the moon. So, she used to help her mother with the work, whatever work was there in the house, she used to help her mother with everything. And in the evening, she used to go to the banks of the Ganga and there she used to watch the sunset. Sunset जब होता था वो उसको देखने के लिए जाती थी. And she loves to see the twinkling stars on the sky. She loves to see the stars. And changing shape of the moon. The moon, it always keeps on changing its shape, na? So she loved all these things. She loved to see the night sky. 30 June 2004. Now this is the date that happened, or this incident was happened. So 30 June 2004.
This day changed Bubbly's life forever. She was trying to finish her work quickly before sunset. From time to time, she would laugh at the funny actions of the six young children playing nearby. Sometimes they chased each other, shouting and screaming. Sometimes they ran around a wooden vegetable cart with wheels. When they got tired of chasing each other, they climbed onto the cart and started jumping and dancing on it. So 30 June 2004, this was the day that changed the Bubbly's life. It changed the Bubbly life forever. हमेशा के लिए बबली की लाइफ अब चेंज होने वाली थी इस डेट को. How? So now the incident is starting. That she was having her usual time. She was trying to finish whatever work was there and helping her mother to finish the work. And before the sunset, she was trying to finish her work. And from time to time, और क्योंकि she was also a child, तो वो time to time वहाँ पे सामने ही बच्चे खेल रहे थे, उनको देख रही थी. And she was laughing at their whatever they were doing. She was laughing at the children and enjoying that whatever the children were doing. She was enjoying it. And then क्या कर रहे थे वो 6 young children? वो क्या कर रहे थे? They were playing. And वो कभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे. एंड समटाइम्स वो किसी एक वेजिटेबल कार्ट, आपने देखा होगा ना जो आपके यहाँ सब्जी वाले आते हैं, वो वेजिटेबल्स रख के लेके आते हैं एक लकड़ी की उस पर गाड़ी पे. सो दैट वाज अ वेजिटेबल कार्ट एंड चिल्ड्रन वर प्लेइंग विद दैट वेजिटेबल कार्ट. एंड कभी वो उस लकड़ी की उस पे वेजिटेबल कार्ट पे उसके चारों तरफ घूम रहे थे. और जब वो एक दूसरे के पीछे भाग भाग के थक गए, दे वर टायर्ड ऑफ चेजिंग ईच अदर, रनिंग बिहाइंड ईच अदर, और वो उस वेजिटेबल कार्ट के ऊपर चढ़ गए एंड दे वर जंपिंग एंड डांसिंग ऑन इट. अब वेजिटेबल कार्ट वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्लोपी सैंडी स्लोप. The cart was standing on a sandy slope. The jumping and dancing of the children on the cart rocked it dangerously. अब कार्ट जो थी एक सैंडी स्लोप, बिकॉज इट वॉज नियर द रिवर के किनारे था, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, यू मस्ट हैव सीन वहाँ पे ऊंचा नीचा होता है. सो वो एक स्लोप पे खड़ी थी, एक फिसलने वाली जगह पे खड़ी थी कि वो सीधा पानी में गिर सकती थी. अब बच्चे तो बच्चे थे, दे वर डिडंट नो इट एंड दे वर प्लेइंग, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया. तो व्हाट डिड दे डू? अब वो उस कार्ट पे चढ़ के उस पर कूदने लगे और उस पर डांस करने लगे. सो द डांसिंग एंड द जंपिंग ऑफ द चिल्ड्रन, उसकी वजह से कार्ट जो थी वो हिलने लगी बहुत बुरी तरीके से. एंड सडनली द व्हील्स ऑफ द कार्ट स्लिप्ड, और एकदम से व्हील्स जो थे कार्ट के वो स्लिप होने लगे. नाउ the cart with 6 children still on it started rolling down the slope towards the river. The cart fell into the water with a loud thud. The children started screaming with fear. They did not know how to swim. अब कार्ट जो थी जिस पर 6 बच्चे खड़े थे, वो उनके हिलने से, उनके जंपिंग करने से, डांसिंग करने से बहुत बुरे से रॉक करने लगी, हिलने लगी. एंड देन व्हाट हैपेंड, उसकी वजह से वो स्लिप हो गए, उसके जो व्हील्स थे वो स्लिप हुए, और स्लिप होने की वजह से वो नीचे स्लोप से नीचे फिसलने लगी. स्लोप यू नो ना कि ऊंची जगह से जब नीची जगह पे आते हैं तो एकदम से तेज़ी से गिरने लगते हैं. तो इसी तरह से तेज़ी से बहुत फास्ट वो कार्ट जो थी नीचे की तरफ आने लगी टूवर्ड्स द रिवर के पास. एंड देन द कार्ट फेल इनटू द रिवर विद अ लाउड थर्ड, और जो कार्ट थी बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, बहुत लाउड वॉइस के साथ उस वाटर के अंदर, रिवर के अंदर गिर गई. And then the children were, because they did not know how to swim, the children were screaming with fear, डर के मारे चिल्लाने लगे and एक हेल्प के लिए बुलाने लगे. Bubbly heard their screams and raced to the spot. Many grown-up people quickly gathered on the bank of the river, but no one tried to save the drowning children. Bubbly, when she heard all the screaming and cries of the children, she ran towards the प्लेस जहाँ पे बच्चे डूब रहे थे, जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पे वो फटाफट भाग के गई. एंड देन व्हाट शी सॉ दैट मैनी चिल्ड्रन वर गैदर्ड देयर, मैनी चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बट
no one was trying to save the children because river was very deep, बहुत deep river है, बहुत बड़ी river है, and children people were afraid कि हम जाएंगे तो हम भी डूब जाएंगे, तो कोई उनको बच्चों को बचाने के लिए नहीं जाता. They all were standing on the bank of the river. They were standing there and just watching the children, and no one know how to save the children. Now it was Babli who jumped into the river and brought two children back safely to the bank. Then she jumped into the water again and saved two more children. As she got ready to jump into the river a third time, her brother came running to help her. Then they saved the two remaining children. अब बबली जो थी when she reached there, she saw that children were drowning. अब उससे नहीं रहा गया. She jumped into the river and then what did she do? She brought two children back. सबसे पहले वो रिवर में कूद गई and एक साथ अपने दोनों साइड पे एक एक बच्चे को पकड़ के, दो बच्चों को पकड़ के वो रिवर के किनारे तक लाई, बैंक टू द ऑफ द रिवर पे लाई. देन अगेन शी जम्प्ड इनटू द वाटर. फिर वो एकदम फिर से उसने एक बार फिर जंप किया एंड देन अगेन शी सेव टू मोर चिल्ड्रन, दो बच्चों को और बचा के लाई. एंड बाय द टाइम शी वॉज रेडी टू जंप थर्ड टाइम, उसका भाई आ गया एंड देन both brother and sister they jumped into the river and saved rest of the two children. जो दो बच्चे बचे थे उन दोनों को भी वो दोनों भाई बहन बचा के वापस ले आए. The brave little girl had saved 6 children from death in the water. इस तरह से brave बबली ने 6 बच्चों को डूबने से बचा लिया. Suddenly, little Babli was a heroine. Our newspaper reporter wrote about her brave deed in the newspaper Amar Ujala. He asked Babli's father to send her name for the National Bravery Award. Babli won the national award and many other awards too. So इस तरह से बबली जो थी अचानक वो एक हीरोइन बन गई बिकॉज शी सेव 6 चिल्ड्रन. उसने अपनी ब्रेवरी से 6 बच्चों को बचाया तो सब उसकी बातें करने लगे. एंड व्हेन अ न्यूज़ रिपोर्टर गॉट टू नो अबाउट इट, उसने अपने न्यूज़पेपर में अमर उजाला में उसके बारे में लिखा और उसके साथ ही उसने बबली के फादर से कहा कि उसका नेम आपको ब्रेवरी अवार्ड के लिए भेजना चाहिए. देन द फादर उसका अवार्ड भेजा होगा, वट एवर न्यूज़ रिपोर्टर ने भेजा होगा बबली का अवार्ड नेम नेशनल अवार्ड के लिए. एंड देन बबली गॉट द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड ऑन 25 जनवरी. एंड देन मैनी अदर अवार्ड्स वर ऑल्सो गिवन टू हर. उसी तरह से उसको और भी अवार्ड्स दिए गए. Babli is still the same simple smiling girl. She is happy that she could do something for others. She is a shining example of courage. So Babli अभी भी वही simple smiling girl है and she is happy. वो बहुत खुश है कि उसने किसी के लिए help की because she helped other children, she helped other people. So she was very happy about her deed कि उसकी वजह से कोई बच सका कि उसने किसी की हेल्प करी. एंड देन शी इज़ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ करेज. और वो एक करेज का, बहादुरी का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है. सो वी शुड बी लाइक हर. वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स इन वट एवर वे वी कैन. सो दिस इज़ द स्टोरी दैट टीचेज यू हाउ यू कैन बी हेल्पफुल to others despite all the shortcomings, all whatever drawbacks you are having. जो भी आपके में कमी हो, लेकिन आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं. Whatever you are having, with that you can help others. Okay children, so this is all in the lesson. I hope you have understood the story about the courage and bravery of Babli and be like her. Children, we are continuing with the same lesson, exercises of the same lesson tomorrow. So see you tomorrow. Bye.